So this is the question number 16 from 2023 midterm evening session paper, and this question comes under the topic user defined function in Python. So in this particular question, four options have been given to you and it has been asked out of these given four options, which one is the most suitable for this definition. तो definition क्या है आपकी? A named group of instruction that are written to carry a specific task. तो this is the definition for functions in Python. क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन देखा होगा तो क्या फॉलो करता है सिंटैक्स? डेफिनेशन, देन नेम ऑफ द फंक्शन, then followed by parameters and followed by column, then we have number of instructions. तो बेसिकली क्या हो गया, ये फंक्शन नेम क्या हो गया आपका? नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ओके, और क्या काम कर रहे हैं? स्पेसिफिक टास्क कर रहे हैं जो कि ये परफॉर्म कर रहा है फंक्शन के अंदर. तो लाइब्रेरी क्या हो गया आपका? लाइब्रेरी क्या हो गया? बेसिकली एक तरह से आप समझ सकते हो ग्रुप ऑफ मॉड्यूल्स. मॉड्यूल्स क्या हो गया आपके? ग्रुप ऑफ फंक्शन. तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल बेसिकली कोई एक वैल्यू को होल्ड करने का कंटेनर. ओके, आई होप यू गॉट एन आइडिया कि क्या है चारों ऑप्शंस क्या है और उनके क्या क्या मीनिंग है. सो फॉर दिस वन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. नाउ बेस्ड ऑन द सिमिलर कॉन्सेप्ट वी हैव अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू. You need to answer this one in comment box. What will be the right answer for this one? Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.